जब आप लोग ऑफिस में हैं तो अपने कुलीग के साथ साथ अपने सीनियर के साथ ज़्यादा रहना शुरू करो, सो दैट यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। कुलीग से आज क्या हो रहा मालूम होता। यूट्यूब पे CGC का चैनल पे एक वीडियो है सुनील कुंटेटा की। he was a director of Oracle. I think he back to Oracle now as a senior director. हम लोग एक सेशन रखे थे उनका। The topic was how to think like a CEO. How to think like a CEO. उसके अंदर उन्होंने बेहतरीन बातें बोली। अगर आप अपने आप को CEO बनाना चाह रहे हैं तो what you should have, अब इसे तैयारी शुरू कर दो। अदरवाइज आप वेट करेंगे लोग आके आपको प्लेट में रख के प्रमोशन देना तो आप आगे बढ़ेंगे बोल तो वो दिना चले गया। Days are gone. You have to fight and get the positions. एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या ये है, सेव एवरी बैग बोले ऐसा है वो, अपने को बचा लो, इसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई रिक्वेस्ट पापा भट्टाचार्य सर टू give some words of wisdom to you and his favor on ASDC in supporting this program by allowing Akbar to spare some time with you guys and also granting you some of you guys here for the internship programs also. Sir, please. I have some humor for your precious time. Okay, so I would be very brief. I won't take much time. So let me tell you, lot of people from ASDC, they are joining in our company. Okay, so only in universe, only the United States, Germany and Ukraine to some extent, they used to develop the product. They could develop the software product, and rest of the people, rest of the all universe, mostly it is a service industry. That is why they have the power. I never could imagine like in India also somebody can develop the product. But thanks to ASDC, I see like some of the people right now, they join in our company and I see they have the acumen to develop the product, and the way they are doing the research. Product research is most important. Like if you understand like what product to be developed, if you do the proper research, then execution part also, it is very important, but execution can be done. Here I see like some of the people from ASDC, they go there in our organization and they do the most critical part like research job. And that is very, very, very critical for our business. And I'm really happy. I never expected like people can do that. Another thing is with this new generation, like I see like I started this 15-16 years back. I used to see like people come here, stay for some times, just look for some figures like 50,000 I'll get after 1 year, and they move, they hop, and they ruin their career after a long time, after some times, and they after 5-10 years it becomes a tedious job for them, and whole life they have a very monotonous life. Now I see like this new generation, they understand like value of doing product development, and they are putting their attention, and I think they understand like most of the people, they understand like how crucial is it like your first job your boss should be tremendously aggressive. You should join in an environment where there is no politics. You should get learning first job, and you should stay there for at least 3 years. So these are the criteria, these are my recommendation. Like at least first 3 years of your career, don't think about money, learn something and join somewhere where you can learn. This is what young age, like before marriage you get a lot of time and you can put maximum time for your learning, and this is what make your base. Otherwise there is another one path, like you can go if you once you come to the industry, then there is another industry like abused industry we call it. Another industry is there, after 5-6 months you will get 50,000, another guy will call you 51,000, another 52,000. You will lose your entire life by slogging like every 3 months, moving somewhere and going nowhere. So most important part is like your first job, good boss, a good environment where you can learn and do what you like. If you follow that and put your 3 years, just 3 years, first job, then your entire career, like you will have a stable life. Stable life means if you do product development, you will be happy always. In service industry, you will work for 17-18 hours. You will have nothing. Okay, at the end of the day, whatever you will be earning, mostly 80% you will put it into disease, because that will culminate of disease. So if you need lifetime happiness, at least first 3 years, put your time in learning, development.
And I have seen like there are a lot of people here, you can take the aspiration from them, you can take encouragement from them. They are doing product development. So if you think like I as an Indian, I come from a background like nobody has developed product or nobody can do it, how I can become like a US or Israeli guy, they only can develop product, how can I not? There are plenty of examples here only. They are developing the product and they are marvelous research. It makes me to believe. Earlier I also lost the faith. Like I thought like in India, these guys, how can they develop the product? But right now I have started believing. I have seen a lot of US work, I have seen a lot of Israeli work, I have seen German work. And Germany is basically branded quality. Quality is more. If you see SAP and everything, it is from Germany. US, I have stayed a long time and I see their product attitude and everything. Now you have got the framework, at least in ASDC, I see like they have given you a platform and you can roll on. And there are people who are doing the product development and they are doing marvelous work. So if they can do, you can also do. So that is what my recommendation to you, like first job is very important. And focus on product development. Don't lose your life simply in the service industry. Do something big, dream big. Okay, by saying, and I also, this would not have been possible without Manohar Bhai or Akbar like fellow. There are plenty of fellow. I know them personally, like they put their life to do this. Their only motto in their life is to recruit you, to deliver you the jobs. So a lot of credit goes to them. Their contribution is infinite. So me doing nothing that much. So thanks a lot. You people please value their effort. Okay. Thank you very much, sir, for the kind words. There is an entire team who is working behind us. Like SEED is the sponsor of this program, as you all know, right? SEED is an organization in America, stands for support for economical and educational development, right? It is through their sponsorship we could able to conduct this kind of programs, and with very good heart I can able to tell you that among 45 students, 19 students got internship and placements altogether. So those who have got the internship and the placement, thank you for that one. And those who have not, for every process, SAP पे भी use होता? SAP, why we use SAP? It's a ERP, right? It's a ERP. For project management, can you name any software? For project management? For Agile is a process, right? Project management, any software? For material management, supply chain, finance, stock market, share market, cyber security, मालूम कुछ? You should know the product of these services, of these areas. वो है इसके अंदर. और the good thing is, now when I am meeting any customer, बड़े customers, I cannot name it, India के माने में एकदम, they are going with Make in India. That means their preference is the product of India. खुला है, उन्होंने जाते के बोलते हैं ठीक है हम हमारे सॉफ्टवेयर बाहर के what you have which is implemented or developed in India बोल के पूछ रहा था. If you have, we are able to give you order. So the market is open, as sir said. Spend time in a product based company. छोटी स्टार्टअप कंपनी होंगी, टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ी तनख्वाह कम मिलती स्टार्टिंग में, बट यू विल लर्न. एंड व्हेन दैट प्रोडक्ट गेट रोल्ड आउट इन द मार्केट, बैठ के खाने का है खाली. एक बार कुछ प्रोडक्ट बन गया, एक बार खाली लाइसेंस बेचना है. क्या है? सिर्फ लाइसेंस बेचना है. दो जनों को बिठा देना है सपोर्ट के वास्ते, लाइसेंस बेचना. कुछ इश्यू आया तो ना फोन करते हैं ना सॉल्व कर देता सपोर्ट इंजन. आपको खाली लाइसेंस बेचना है उसके बाद. Guys, this is unplanned presentation, so I don't know where to start. One thing I have observed in my 20 years of career is when I started my career, I was not focused on money. I was focused on learning. At some places, even I have worked for free. In front of a building, we have Times NGCC. There I have worked for 4 months as a faculty, and I was not interested in money. I was more focused on learning, and I think that is the only one formula that made me to start the company. I have done a lot of odd jobs like data entry or
I worked in a clinic and laboratory. I learned many things, but somehow I got into the IT thing. And when I got into the IT thing, it was very interesting for me. And from there, I used to work around 18 hours a day without getting tired. We start office at 9 o'clock and close at 12 o'clock. Again, next day I will be in the office at 9 o'clock. So I was more focused on learning. I never focus on money. So when I got into the e-learning business, which was a job, I can say, not an odd job, but a good job. So over there, the way the people used to work is depending on how much work you are doing. Like you do 10 slides a day. So at the end of the month, they calculate how much slides are there and then they pay accordingly. I never calculated how much work I did. I just worked. And looking at my hard work, my bosses who were very nice, good, still they are nice, even though I left them, but still they are nice. So they found that I focus on work, not on salary, and automatically my salary was increasing. The people who were senior to me and who trained me, they got less salary and I got more salary. I worked there for around 7 years, and in these 7 years I have explored all the departments over there. I was not focused only in the development. I was a flash animator. I used to do the animations, so I didn't stop myself in the animation. When my boss says we have some other new things, do you want to explore? And then I was the first person to do that. So whatever challenging work they have given to me, I took that, and in these 7 years I have learned a lot, everything about the industry, e-learning industry. And for some reason I thought I will do something more challenging. I was not able to get any more challenges in my company because everything was repeated. I thought I will do something bigger. Then I left the job just in one day. It was not a planned one. So after that, around 10 months, I was struggling, which was a good struggling. Struggling is it's a bad word, but I was learning. So after spending 10 months, I got the first project of $50. That gave me confidence. And from there, it was like a smooth journey, no hard job. It was easy. We were able to get good clients, and within no time, from 2010, 2014, in these 4 years, we went from 0 to 40 staff. And in 2014, I went to Australia. I started a company or a small setup over there. Then we have a small setup in Canada. So everything looks like magic. Even though I'm not capable of doing such great things, but still I could manage and establish this company. Then I started moving into the product. E-learning is a service thing, but then we started doing the product. We have our learning management system, like how you guys are doing the product. So we have a couple of products which are stable, and we are doing some good sales in the market. So at the end, I would like to give an example. हिंदी में बोलता हूँ example ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आना. वर्टिकल ऐसे उसमें ग्रो हो जाओ आप लोग, ऐसा सीधा ऊपर मत जाओ. क्योंकि कुछ लोगों को मैं देखा जो मेरे पास में काम करते थे, वो लोग सपोज ग्राफिक डिज़ाइनिंग में है, समझो आज भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट संभालना नहीं आता, उनको टीम लीड संभालना नहीं आता. वैसा कैरियर मत बनाओ. आप जितने नए चीज़ एक्सप्लोर कर सकते करो. एक कहीं पर एग्जाम्पल सुना था, वो मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा. एक बीज रहता जो ज़मीन में डालने के बाद में उसको कम से कम 18 महीने या 2 साल लगते हैं वो ज़मीन से बाहर निकलने के वास्ते. बट वो 18 महीने क्या करता, उन्हें ज़मीन के नीचे रूट्स बनाता, और जब उन्हें ऊपर आएगा उसको फिर कोई ना हवा गिरा सकती ना तूफान गिरा सकता. तो एक अच्छा टाइम दो आप वर्टिकल ग्रो होने के लिए. मान लो आप 2-4 सॉफ्टवेयर्स में ट्रेंड हैं, तो उसी में मत रुक जाओ. और कुछ सीखने मिलता है, और कुछ सीखने. और ख़ासकर आप लोग अपना एंड प्रोडक्ट नहीं, एंड जो कैरियर का रहेगा वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तक जाओ. डेवलपर में कुछ नहीं है मतलब ऐसा बोलते सर बोलेंगे क्या बोल रहे हैं बोलकर. डेवलपमेंट आप
5 साल 7 साल तक कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आप अपना कैरियर खराब कर रहे हैं। टीम लीड बनो, प्रोजेक्ट मैनेजर बनो और जो मेन रोल्स रहते हैं वहाँ पर जाने के लिए कोशिश करो। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, बस। थैंक यू। These are two different things, right? हमदर्द भाई का बोलना यह है कि एक लिमिट तक अपना दिमाग काम करता है, अपन कोड लिख सकते हैं। आफ्टर सम टाइम यू हैव टू मैनेज दोज प्रोडक्ट्स, दैट बिकम्स अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यानी एक प्रोडक्ट बन गया, अब एक कस्टमर को दे दिया, तो व्हाट इट बिकम्स? आई एम एक्सपेक्टिंग ए राइट आंसर। एक प्रोडक्ट बना लिए, अब एक कस्टमर को बेच दिए, तो व्हाट इट बिकम्स? It becomes a project, right? You have to make sure that your product works for that particular customer. You do customization, so you have to manage that project. So that is what Amjad bhai say. Now you being a fresher, career start हो रहा, don't walk behind money. कोई भी आगे बोलता आपको, कंपनी में आता है, हाईटेक सिटी में भी आपको कई कंपनीज वाले आते हैं। ये टाइम पे 30-40 हज़ार की नौकरी देके भाग जाने से अच्छा आप एक 3 साल पहली कंपनी में गुजारिए, उसके बाद अच्छे पैकेजेस पे जा सकते हो। That gives more confidence and that will be a good start for you in terms of career. क्योंकि मैं देखा बहुत लोग वो शॉर्ट टर्म इधर से उधर जो कंपनीज को हॉपिंग करते हैं ना इधर से इधर, उनका करियर कभी ना टिकता होना। 4-5 साल में डेजिग्नेशन चेंज हो जाते हैं, लेकिन फाइनली ना उससे यार कुछ भी नहीं सीखे। उसके बाद जब जंप मारते कोई भी इंटरव्यू से क्रैक नहीं कर सकते। क्यों? कहीं के भी नहीं रहे लोग। तो यू शुड बी एट वन प्लेस फॉर सर्टेन टाइम टू बी एन एक्सपर्ट सो दैट यू कैन फेस द इंटरव्यू। मेरा पहला जॉब तो खैर 2 साल का था, दूसरा जॉब 15 साल का था। समझा रहा ना? मैं समझा था वहाँ से रिटायर होऊंगा बोल के, लेकिन किस्मत साथ नहीं थी। सो आई हैव टू टेक, आई फेल्ट दैट मैं कंफर्ट जोन में आ गया। यू नो कंफर्ट जोन किसको बोलते हैं? कंफर्ट जोन। तो मैं जब कंपनी रिजाइन किया 15 साल के बाद, सो द मैनेजर जो भी हमारा जनरल मैनेजर था, ही कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी, ए सैयद आई विल डू समथिंग फॉर यू, तू मत जा, यूएस भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना बिस्किट डालना, वो चलता हुआ चल। That goes on in every company. बोला सर एक ही रीज़न है कंपनी छोड़ने का। बोला आई वांट टू कम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। मैं इतना कंफर्ट हो गया था वो जॉब पे कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं उसको बोल दिया खुलना, मैं 8 घंटे जॉब नहीं कर रहा ऐसा दिख रहा हूँ। आई एम जस्ट फिनिशिंग एवरीथिंग इन 1 or 2 hours, एक्सचेंजिंग ईमेल्स एवरीथिंग। रेस्ट ऑफ द टाइम इज किलिंग मी। आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट कि जो है ना मेरी 8 घंटे की रोटी हलाल हो रही नहीं हो रही काइंड ऑफ स्टफ। देन ही गिव ए गुड आंसर। बोला कि once you reach some certain stage, your expert opinion counts no matter how many hours that you spend, and that is going to happen everywhere. Having been in the industry for around 18 to 20 years, that is the case with many of the seniors also. इसलिए आप देखते होंगे खाली थोड़े सीनियर्स रहते हैं ऑफिस में, खाली बातें कर लेते फिर टीम में आपको दिखता खाली बातें करके पैसे ले रहे हैं बोल के। दे आर एक्चुअली शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस। सो थिंग इज बी एट वन जॉब फॉर द फर्स्ट जॉब एंड बी देयर फॉर ड्यूरेशन टिल यू बिकम फील के जो ना मैं आप कंफर्ट जोन में आ गया, लेकिन वो करने का। एंड लर्निंग शुड नॉट बी स्टॉप। लर्निंग शुड नॉट बी स्टॉप। यूट्यूब इज अ डिजिटल यूनिवर्सिटी, राइट? फुल स्टैक डेवलपमेंट आप पढ़ लिए, पढ़ते जा रहे हैं, उसमें काम करते जा रहे हैं। यू सी हाउ द अदर थिंग्स कैन बी इंटीग्रेटेड, राइट? इसका जो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट मार्केट में गया तो कस्टमर एक ही पूछता, मैं ये ले लेता हूँ, मैं ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर है, उससे कैसा इंटीग्रेशन करेंगे? देन यू शुड नो। So integration is one of the key item. So with this, I congratulate all of you once again for completing this 6 months course. फातिमा तबस्सुम, मारुति सुरेश, Muhammad Mansoor is a special kid for us, sir. Initially he didn't got interest in programming, but right now he can do anything. Sayyid Adil,
शेख नाजिया, इनका एक छोटा सा बेटा भी है, प्लस शी स्टार्टेड लर्निंग एंड देन शी गॉट इंटर्नशिप एट सिनेप्टिक्स ऑल्सो. शी इज कमिंग रेगुलरली टू ऑफिस. शाइस्ता सुल्ताना, शाइस्ता सुल्ताना. स्नेहा नामाजी, मोहम्मद अब्दुल्ला, मैमुना, मोहम्मद अब्दुल्ला, मैमुना गुलब शाह, इश्तियाक मोहम्मद, रहमत, उत्तम चौहान, ज़ईम मोहम्मद. तो हम लोग क्यों ये सब कुछ करते हैं? सीड हो, दी कुरान फाउंडेशन हो, वी डू दिस टू प्लीज द गॉड ऑलमाइटी, क्योंकि हम समझते हैं कि द बेस्ट सर्विस इज द सर्विस टू द ह्यूमैनिटी. ठीक है. अभी इफ यू कंसिडर लाइक इन इस्लाम देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ज़कात, है ना. ज़कात बोल के एक कॉन्सेप्ट है. इट इज कॉल्ड मैंडेटरी चैरिटी. यानी अगर किसी के पास कुछ वेल्थ है, कुछ पैसे है, उसके ऊपर एक साल कंप्लीट हो गया. लेट्स से यू हैव 1 लाख रुपीस इन जनवरी, बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपके 1 लाख वैसे सेव है. यू मस्ट गिव 2.5% यानी 2500 टू द चैरिटी फ्रॉम दैट 1 लाख रुपीस. इट इज मैंडेटरी चैरिटी. नहीं देंगे तो गुनाह होगा, नहीं देंगे तो गुनाह होगा, सबको देना है. तो किसी के पास एक लिमिट है, 7 तोला सोना गोल्ड और 52 तोला चांदी सिल्वर. इसकी इक्वलेंट अमाउंट भी अगर है किसी के पास, और उसके पास अगर 1 साल गुजर गया, तो उसको मैंडेटरी चैरिटी देना है. समझ में आ रहा ना. ये तो हो गया मैंडेटरी चैरिटी. लेकिन ये तो व्हाई दिस चैरिटी? इट इज टू ब्रिंग एवरीवन सोशली इक्वल. क्या हमारे पास गरीब न रहना कोई, है ना, उसको भी अपने साथ, उसका लेवल भी अपने साथ आने के लिए, सोसाइटी में एक इक्वालिटी लाने के लिए ये ज़कात का कॉन्सेप्ट है. लेकिन आज के जमाने में वी हैव टू डू मोर. कंपनीज 5 days a week कई को काम करती हैं, वर्क लाइफ बैलेंस और पर्सनल जो भी काम है कर लो, और प्रोडक्टिविटी आती, but it comes after doing something. So what you should do to bring the productivity in us? आज मैं एक आर्टिकल पढ़ा था. आर्टिकल ये था, जो है पीछे सुनो भाई, आर्टिकल ये था कि हाउ टू ब्रिंग एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस इन अस. अपने अंदर कैसा लेके आएंगे एम्पैथी. एम्पैथी बोलता हूँ मदद जो भी है, सिंपैथी, एम्पैथी. और इमोशनल इंटेलिजेंस है वो कब होता मालूम? जब अपन लोगों के बीच में रहते, सोशल होते, लोगों की मदद करते, जब वो अपने दिमाग में एक्टिव होता. अदरवाइज हम जो है ना 5-6 दिन पूरा खाली फोनों पे, लैपटॉपों पे रह के इंसान की इज्जत करना छोड़ देते हैं. अदरवाइज तो 2 दिन किस लिए है? अपने पर्सनल काम भी कर लो, वर्क लाइफ बैलेंस भी आ जाता, साथ ही साथ कुछ सोशल वर्क करना, सोशल सर्विस भी करना. द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अगर तुमको पता चल जाए कि क़यामत आने वाली है, क़यामत आने वाली पता चल गया, अगर आपके हाथ में छोटा पौधा है तो लगा दो बोल के. तो मोहलत कब तक है चैरिटी करने की? जबकि मालूम हो जाएगी क़यामत आने वाली है. तो लिहाजा आज आप लोग फ्रेशर है, आज नहीं तो कल आपको तो जॉब मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है. यू विल बी वर्किंग समवेयर. लेकिन द बेस्ट वे टू गिव बैक टू द सोसाइटी इज नॉट द मनी इटसेल्फ. पैसा नहीं है, आजकल पैसे बहुत है लोगों के पास. अपना टाइम देना है. आपको क्या देना है? टाइम देना है आप लोग. तो टाइम कैसा देते हैं? अपने खानदान के बच्चे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको गाइड करना, उनको ट्यूशन पढ़ाइए या उनको गाइड करिए जो जॉब नहीं है. लेट्स स्टार्ट विथ योर ओन होम, विथ योर ओन फैमिली, विथ योर ओन रिलेटिव. फिर अपने नेबर्स में कौन है, ऐसा करते करते अपन लोगों की मदद करना शुरू करते हैं. तो आज आप ये रूम में एक कमिटमेंट दीजिए और अपने आप को और ऊपर वाले को जो है ना हाजिर और नाजिर जान के एक प्रॉमिस कर लीजिए कि अगर हमको एक अच्छी जॉब मिली, और जो भी जॉब मिली उसकी कमाई से और अपने स्किल से हम जो है ना लोगों की मदद करेंगे. ठीक है ना?
ये कमिटमेंट है आपके और अल्लाह ताला के बीच में, ऊपर वाले के बीच में। हम बीच में नहीं आना चाह रहे हैं। तो ये नियत रखिए तो अपने काम में बरकत भी होती है। क्योंकि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा, तुम 1 कदम मेरे पास पढ़ो, मैं 10 कदम तुम्हारे सामने। ठीक है, दीन ये नहीं, कुरान में आयत है इस चीज की, दीन ये नहीं कि तुम मस्जिद में जाके जो है ईस्ट और वेस्ट को मुंह फेरो और जो ना नमाज हो, नहीं। एक है इबादत और एक है क्या है, लोगों के राइट्स भी है अपने ऊपर। दिन भर पहाड़ पे जाके अगर अपन जो है ऊपर वाले की वर्शिप करते रहे और जो है ना अपने लोग जो अपने पर डिपेंड है, घर में बीवी बच्चे माँ बाप, उन्हें भूखे हो जा रहे, तो क्या ऊपर वाला राजी होगा अपने से? बिल्कुल भी नहीं, राइट? ही वांट अस टू डू हार्ड वर्क एंड फ्रॉम हार्ड वर्क व्हाटएवर यू आर गेटिंग शेयर विद अदर पीपल। समझ आ रहा ना? तो मेन मकसद हमारा क्या है, एक दूसरे की मदद करने का है। तो हमला अभी आप वही मिशन पे हम लोग है और वही मिशन पे आप लोगों को ये प्रोग्राम सेट करके दिए। तो हम आपको सब यहाँ पर एक जगह लेके आया, ठीक है। वी ऑल वांट टू कंट्रीब्यूट, ठीक है। अब हम लोग कर लिए, सर इतना अचीव करें उनके लाइफ में, ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वी वांट टू लेट द कम्युनिटी ग्रो, उनकी कंट्री को ग्रो करना चाह रहे हैं, उनकी स्टेट को ग्रो करना चाह रहे हैं, उनके लोगों को ग्रो करना चाह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर अपने को यहाँ पर क्या करने का, ये सोच से अपने को आगे बढ़ना है। अब आप लोग कर लिए डेवलपमेंट सीख लिए, फुल स्टैक सीख लिए, यहाँ तक आप लोगों को रुकना नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ से, अब ये आपकी जर्नी अभी स्टार्ट हुई, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करने का है, आपके छोटे भाई के लिए आपको गाइड बनने का है, ठीक है। और ये गाइड हम हर नमाज में पढ़ते, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह सीधे रास्ता का गाइड, अपन गाइडेंस चाह रहे हैं, राइट। तो ये गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अब गाइडेंस मिली, यहाँ पर एक आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो आप अब फॉलो करें उसको, अब स्टार्ट करें, राइट। तो आपको अब यहाँ पर आपके छोटे भाइयों को देखने का है। आपके छोटे भाई नहीं तो फैमिली में कोई ना कोई रहता, उन लोगों को शुरू से ही, अगर वो इंटर में है, स्कूलिंग में है, अभी से उन लोगों को गाइड करना स्टार्ट करो, उन लोगों को पूछते रहो, दावतों में मिलते, उनके फैमिली को एंकरेज करो कि जैसे डेवलपमेंट, IT में बहुत स्कोप है यहाँ पर। जब उन लोग वो स्टेज से जब स्टार्ट करेंगे तो अपने को यहाँ पर देख सकते हैं, AI में अपने को जाना उतना डिफिकल्ट नहीं होता वो बच्चों को। जब बोला इंटर इंजीनियरिंग में जो है सो एक अच्छे प्रोडक्ट्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बिल्ड कर दे रहे हैं, तो लोगों को AI में रिवॉल्व होना ज्यादा टाइम नहीं लगता, उन लोगों को इनोवेशंस लाना ज्यादा टाइम नहीं लगता, राइट। क्यों बोले तो अपने एक्सपीरियंस इनोवेशन लेके आता, राइट। तो उन लोगों को एक्सपीरियंस कहाँ पर मिल जाता? अब स्टार्ट करें एट 21st, लाइक अपन 21, 20 जितने भी अपन जब उन लोगों को 15 में गाइडेंस दे दिए, तो उन लोगों का क्या है 20 तक अब तक दे हैव ऑलमोस्ट 5 years का एक्सपीरियंस रहता हूँ, तो लोगों को इंडस्ट्री पूरी ऑलमोस्ट समझ में आती, ठीक है। तो वैसा अपन क्या करना, अपनी कम्युनिटी को ग्रो करना, अपनी कंट्री को, स्टेट को, तेलंगाना को अपन जो सो एम्पावर करना, ठीक है। यहाँ पर अपना अब सपोज 50 है और एक दो को ऐड कर लियो, कितने 100 फिर मल्टीप्लाई होते, तो उसमें क्या है, हम सबका फायदा होता, ठीक है। और ये नॉलेज ऐसी चीज है, जब आदमी, अपने को मालूम है ऑलरेडी, राइट, कि जब खबर में जाता आदमी 2 चीज़ की चाहता, क्या चाहता हूँ, उसके लिए कोई दुआ कर दे या फिर उसके लिए कोई सदका कर दे, ठीक है। ये बहुत दो, तब कुछ कर ही नहीं सकता उन्हें, तो ये 2 चीज़ की बहुत एक चाह रहती है उसको, कोई इसके लिए दुआ कर दे या फिर कोई उसके लिए सदका कर दे। तो एक चीज़ अपने करने अब है, अल्लाह ताला अपने को कुछ सिखाया, एटलीस्ट आप लोग एक रिएक्ट सीखे होंगे, ठीक है। नोट में किसी को अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो रिएक्ट में HTML CSS की कितनों को आप लोग समझा सकते हो, उतना सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश करते रहना। तो जब उन्हें जाके दूसरों को जब सिखाता, उन्हें जाके, तो अपन कहीं ना कहीं एक्सपायर हो जाते, राइट। तो जब जाके अपने को ये चीज़ें क्या है फायदे में आते, उन्हें जब 1 रुपये भी कमा के किसी को सदका दिया, वो सदक़े से कोई फायदा उठाया, तो उसका सवाब वहाँ से आपको वहाँ तक मिलता, ठीक है। सो या थैंक यू जज़ाकल्लाह खैर सर for giving us the great opportunity here. Akbar sir, thank you.